Okay, here. ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਬਣਾਓ ਬਾਪੂ ਦੇ ਪਿਓ ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਏ ਜੀ First of all, thank you so much for taking time and being patient. Just wanted to introduce you about the ceremony, what it is about, brief introduction, what we're doing today. So this is called Anand Karaj, meaning ceremony of bliss. So what we are doing here, we are in the sanctuary in the presence of Guru Granth Sahib. Guru Granth Sahib is our living Guru, where we get our guidance and wisdom from. We don't have any living Guru. Guru Granth is our living Guru, which gives us guidance from the Shabd, from the wisdom what is written in. So you look good with the turban and crown. But let me give you a little bit disclaimer and to put you at ease. I know it's a little bit time where you get a little bit too excited and maybe nervous a little bit. So you don't have to worry about anything that you can do wrong here. When you are in Guru's sanctuary, Guru has already blessed you. Guru loves you. Guru loves us all, whoever is in his presence, regardless who they are. They love all of us. So please, be at ease. Don't have to be nervous. It's your day. Enjoy your day. We are making history. So just all of you relax, please. We are here to get blessing of Guru. Nothing but nothing else. Like I said, you can't do anything wrong. Don't worry about anything. Did I do it right? Did I sit right or not? Don't worry about it. So I'm going to tell you a little bit about the turban you're wearing, and you have this beautiful throne on top of it. So obviously there is history behind it. Back then, nobody was allowed to ride horses or wear turban or hold sword like you're doing. There was a lot of inequality.
But Guru said, no, everyone in this world, all human beings are equal. There shouldn't be any favoritism on the basis of race, nationality, color, or caste, or social or economic status. That's what Guru said. So anybody and everybody said could be eternal. Everybody could be known. So what's the difference? He says your deeds, it's not where you were born and which community, which caste, which economic status you belong to. You would be judged at deeds, the work you do, how good deeds you do. That's all. So he said everybody in this universe, only humanity is one race. That's what Guru said. All universe is one race of human beings. So nobody is less, nobody is more. The only difference it makes us being different is what kind of deeds we do. Those who do good deeds, they become good, no matter what they are. Those who don't, we know what it is like. So this throne, anybody can wear it, and you wearing it, you look good. So back then, there used to be big kind of congregations, which king used to sit on the stage, and big chair, as you know, and people used to come to him and say, hey, I got this problem, I need this, I want your help to do this, can you help me do this and that? Guru said, I'm going to give you king of the kings in Guru Granth Sahib. He said, you don't have to beg from anybody else. You can beg from Guru Granth Sahib and you will get whatever you want, unconditionally. But there is, so what we are doing here is we praying to Guru. Guru, bless us, we are starting a new journey in our life. That's what we're doing here today. You are here to get a blessing, but I'm telling you, Guru says, if you follow the directions of that wisdom, which is universal wisdom, it could be here, it could be any other religious book, but fundamentals are same, right? So he says, if you follow that wisdom, you would always be happy, healthy, and prosperous. So today we are here to ask Guru's blessing when you're starting your new life. So what you will be doing is, Paisa will sing Shabads, which then you will go for Tamar. It's not you are making any commitment. It is, you are realizing that, hey Guru, I'm going to follow wisdom of a religious book like you to live my life graciously and wonderfully and a great citizen, as a great citizen. That's what we're doing here. We are asking Guru, hey, bless me with your wisdom that way I can live wonderful life, especially when I get into married life, we could be happy. So one thing Guru assures us, so if you follow the path of this Guru, and if you follow this wisdom that, hey, like a golden rule, if you will treat everybody the way you want to be treated, very simple, right? We know that. And when you're here, you are committing to each other today, right? It's a big commitment. You are making Guru as a witness on this spacious occasion. So keep in mind that Guru is your witness. Two things, what you have to do, you and your bride has to do, is keep them one fundamental in mind, that we all are equal, we need to respect each and everybody. It starts from home. So I'll probably wait for that. I'll wait for her and maybe I'll conclude when she comes in. But I'm going to give you a little bit knowledge about what's going to happen. So you will sit there. I think she's about to come. You will sit here, she will sit here. Then you and your parents will stand, do a little prayer. That prayer means Guru allow us to start this ceremony. And that after that, Guru is simply talking to you and telling you how to live your life. In this one, there are 4 different verses they will sing. Each time you will go around and sit down there, come back and sit down there. I'm sure you know. Do you need help? You know that. Okay, good job. You've done your homework. All right. So I don't know if you've seen the translation. We will try to do the translation on the screen.
But we have a book. Give me your contact information. I can send you PDF book. What's the meaning of what we did today? That will give you even more insight of it if you have not received it. But two things I want to remind you is please relax. You can't do anything wrong. All Guru loves us when we are here, and we are all blessed. Oh, here she is. साजन तेरे चरण की होए रहा सद्गुण होए रहा सद्गुण साजन तेरे चरण की साजन तेरे चरण की होए रहा सद्गुण होए रहा सद्गुण साजन तेरे चरण की साजन तेरे चरण की नानक शरण तुम्हारे नानक शरण तुम्हारी देखो सदा हजूर देखो सदा हजूर साजन तेरे चरण की साजन तेरे चरण की होए रहा सद्गुण होए रहा सद्गुण साजन तेरे चरण की साजन तेरे चरण की साजन तेरे चरण की साजन तेरे चरण की ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਦੇ ਸਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ संता संग निधान अमृत चाखिए वाहिगुरू जी अमृत चाखिए वाहिगुरू जी मैं बंजन मेहरबान दास की राखिए वाहिगुरू जी दास की राखिए वाहिगुरू जी नानक हर गुण गाए नानक हर गुण गाए अलख प्रभ लाखिए वाहिगुरू जी अलख प्रभ लाखिए वाहिगुरू जी ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਏ ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ
सतनाम श्री वाहिगुरू ओंकार जी की फतेह। श्री भगवती जी साहब वार श्री भगवती जी की काल प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक देते हैं। फिर गुरु अमरदास रामदास जी सहाय अर्जन हर गोबिंद ने सिमरा श्री हरि श्री कृष्ण जय जी सब हे भाव सिमरी है खानों में सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सहाय। दसवें पातशाह धन ग्रंथ साहब जी के दर्शन के रात 8 का दिन के खालसा साहब बोलना जी पातशाही चार साहब जाने का जिनके नाचे सत्य ने नाम जपया बंदी शक्या देख चलाए देख बाय देख के निट की था जन कह रहे सचेरे कमे के अंदर के खालसा साहब बोलना जी जिना सिंगा सिंगां दरमी सी दिते बन बन कटाए को भेड़ में चकड़ियों पे चढ़े आ रहे नाच वाए गए गुरद्वारे की सेवा लिए कुर्बानियां कीतियां सिक्खी के सत्संग संग निभाई तेना सिंगा सिंह कमाई के अंदर के खालसा साहब बोलना जी निमानिया के मान निचानिया के तान रोटियां की उदो जमन के बालिक सृष्टि के करता दत्ता जोगी प्रीत मंत्रिया ने दातार पातशाह धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी का भार बख्शिश रंग सदके आबिद प्रदीप एडम विट आरागी दत्ता तज बच्ची कश्मीर कौर जी है दत्ता अचानक कार्य समुदाय करने वास्ते आप जी चलना हाजिर ने एक करने कृपा करने कार्य करने की इजाजत बख्शिश करनी लावा पाठ करने की इजाजत बख्शनी बागडोरी के सत्ता रहमत प्रयात रखने कर गुरसिखी जीवन नाम बढ़ना सेवकों की कार्य में सफलता बख्शनी हर मैदान से बख्शनी सिंह साहिबना पवित्र हुक्मनामा पवित्र हुक्मनामे के आधार से चलन बख्शो सही प्रीतम प्यारे मेल जिन मेरे नाम जी का नाम चित्ता में नानक नाम चढ़ी कला तेरे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन सुवनी हर रतन जड़ावे हर प्रेम पुरख मन मठा सबे काज सवेलड़े थिए गुरु नानक सतगुरु तुठा सबे काज सवेलड़े थिए गुरु नानक सतगुरु तुठा। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। सूरठ महला पंज प्रभ की शरण सगल भय लाथे दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुरु जया प्रभ की शरण सगल भय लाथे दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुरु न्याय प्राप्त जियो कुबेर साहिब दाता कर कृपा प्रभु दीन दयाला गुण गावो रंग राता राम सतगुरु नाम निदान जड़ाया चिंता सगल विनाशी कर कृपा अपनो कर लीना मन वसिया विनाशी ताको विघन न को लागे जो सतगुर अपने रखे चारण कमल बसे अंतर अमृत हर रस चखे कर सेवा सेवक प्रभु अपने जिन मन के इच्छ पुजारी नानक दास ताके बरहारे जिन पूरन पैज रखाय हर सेवा सेवक प्रभु अपने जिन मन के इच्छ पुजाई नानक दास ताके बरहारे जिन पूरन पैज रखाय।
ਬੇਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾਓ। ਪੱਲੇ ਤੈਂਡੇ ਲਾਗੀ, ਪੱਲੇ ਤੈਂਡੇ ਲਾਗੀ, ਪੱਲੇ ਤੈਂਡੇ ਲਾਗੀ, ਪੱਲੇ ਤੈਂਡੇ ਲਾਗੀ। ਪੁਸਤਕ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਂ ਹਬ ਵੰਜਾਂ, ਛੋੜਿਆ ਹਬ ਕੇਜ ਤਿਆਗੀ, ਹਬੇ ਸਾਕ ਕੁੜਾਵੇ ਡਿਠੇ, ਤੋ ਪੱਲੇ ਤੈਂਡੇ ਲਾਗੀ, ਪੱਲੇ ਤੈਂਡੇ ਲਾਗੀ, ਪੱਲੇ ਤੈਂਡੇ ਲਾਗੀ, ਪੱਲੇ ਤੈਂਡੇ ਲਾਗੀ, ਪੱਲੇ ਤੈਂਡੇ ਲਾਗੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਜਣ ਤੂੰ ਹੈ ਸੈਣ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਝੋ ਪਰਭਉ ਮਾਣਿਆ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਮਾਣਿਆ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੁਹੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸੁਹੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਪਹਿਲਣੀ ਲਾਓ, ਪਾਰਵਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ, ਪਾਪ ਤਜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਓ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ, ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧੋ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਕ ਪਾਪ ਗਵਾਏ। ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ। ਜਨ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਲਾਭ ਪੈਲੀ, ਆਰੰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ। ਜਨ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਲਾਭ ਪੈਲੀ, ਆਰੰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਉ, ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਉ, ਪਰ ਬਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ, ਪਾਪ ਤਜਾਇਆ। ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ, ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ। ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ, ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਰਾਖੋ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਕ ਪਾਪ ਗਵਾਇਆ। ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ। ਜਨ ਕੈ ਨਾਨਕ ਲਾਉ ਪਹਿਲੀ, ਆਰੰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ। ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਉ, ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਉ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਉਜੜੀ ਲਾਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਨਿਰਭਉ ਭੈ ਮਨ ਹੋਏ,
हमें मैल गवाया बलराम जियो निर्मल भव पाया हर गुण गाया हर वेखे राम हदूरे आत्म राम पसारा स्वामी सर्व रया भरपूरे अंतर बाहर हर प्रभु को मिल हर जन मंगल गाए जन नानक दूजे लाभ चलाए अनहद शब्द बजाए जन नानक दूजे लाभ चलाए अनहद शब्द बजाए हर तुझड़ी लाओ हर तुझड़ी लाओ सतगुर पुरख मिलाया बलराम जियो निर्भव है मन होए हो मैं मैल गवाया बलराम जियो निर्मल भाव पाया हर गुण गाया हर वेखै राम अधूरे हर आत्म राम पसारया स्वामी सर्व रहया भरपूरे अंतर बाहर हर प्रभ एको मिल हर जन मंगल गाए जन नानक दूजी लाओ चलाई अनहद शब्द बजाए हर दुजड़ी ला हर दुजड़ी ला वाहिगुरु हर चीतड़े लो मचाओ गया बैरागिया बलराम जियो संत जना हर मेल हर पाया वडभागिया बलराम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत जना वडभागी पाया और कथे अकट कहानी हृदय हर 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 गुण उपजी हर जपे मस्तक भाग दियो जन नानक बोले तीजे लावे हर उपजे मन बैराग दियो जन नानक बोले तीजे लावे हर उपजे मन बैराग दियो हर तिजड़ी लाओ हर तिजड़ी लाओ मन चाओ गया बैरागिया बलराम जियो संत जना हर मेल हर पाया बड़भागिया बलराम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत जना बड़ भागी पाया हर कथिए अकथ कहानी हृदय हर 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 गुण उपजी हर जपिए मस्तक भाग्यो जन नानक बोले तीजी लावे हर उपजै मन बैरागियो हर तिजड़ी ला हर तिजड़ी ला वाहिगुरु हर चौथड़े लो मन सहज बया हर पाया बलराम जियो गुरमुख मिलिया सुभाए हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो हर मीठा लाया मेरे प्रभाया अंतन हर लिवलाई मन
ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਪਲ ਪਾਇਆ ਸੁਆਮੀ ਹਰ ਨਾਮ ਵਜੇ ਵਨਾਈ ਹਰ ਠਾਕੁਰ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ ਧਨ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਵਿਗਾਸੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਚੌਥੀ ਲਾਵੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਅਵਨਾਸੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਚੌਥੀ ਲਾਵੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਅਵਨਾਸੀ ਹਰ ਚੌਥੜੀ ਲਾ ਹਰ ਚੌਥੜੀ ਲਾ ਮਨ ਸਹਿਜ ਪਾਇਆ ਹਰ ਪਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਿਆ ਸੁਭਾਏ ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਇਆ ਅਨ ਦੇਨ ਹਰ ਲੇਵ ਲਾਈ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਇਆ ਸਾਮੀ ਹਰ ਨਾਮ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕੁਰ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ ਧਨ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਿਗਾਸੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਚੌਥੀ ਲਾਏ ਹਰ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਚੌਥੀ ਲਾਏ ਹਰ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ ਹਰ ਚੌਥੜੀ ਲਾ ਹਰ ਚੌਥੜੀ ਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸਿੱਧੀ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ ਸ਼ਬਦੋ ਤਗਾਓ ਹਰੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਰੂਪ ਸਭ ਵਿਸਾਰਿਆ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਰ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ ਸਮਾਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋਚਿਆ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਤਿਸਤੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਆਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਮਨ ਸਾਧ ਸੁਖਮਾਇਆ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋ ਜਿਸ ਦੀ ਆਏ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਰੋਪੇ ਯਾਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਵਟ ਸ਼ਬਦ ਤਿਕਾਰ ਸੁਭਾਗੈ ਕਾਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੀ ਕਾਲਾ ਰਿਤ ਗਰਧਾਰਿਆ ਪੰਜ ਦੋ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਹਰਮ ਪਾਇਆ ਦਿਲ ਦਿਨ ਦੋਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸਭੋ ਆਦਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ ਅੰਤ ਸੁਣੋ ਵਟ ਪਾਕਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨਿਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਮਨ ਭਰਪੂਰੇ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨਿਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ ਵਿਆਹ ਹੁਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਵਿਆਹ ਹੁਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਵਿਆਹ ਹੁਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਵਿਆਹ ਹੁਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਰ
हर रतन पदारथ लागा, हूँ मैं रोग गया दुख लाथा, हूँ मैं रोग गया दुख लाथा। आप आपे गुरमत खाता, आप आपे गुरमत खाता, काल मूरत भर पाया विनाशी, अकाल मूरत भर पाया विनाशी। ना कदे मरे ना जाया, कदे मरे ना जाया, ब्याह हुआ मेरे बाबला, ब्याह हुआ मेरे बाबला। गुरमुखे हर पाया, गुरमुखे हर पाया, ब्याह हुआ मेरे बाबला, ब्याह हुआ मेरे बाबला। पूरी आशा जी पूरी आशा, पूरी आशा जी पूरी आशा। पूरी आशा जी पूरी आशा, मनसा मेरे नाम पूरी आशा, मनसा मेरे नाम पूरी आशा। मोहे निर्गुण दियो सब गुण तेरे, मोहे निर्गुण दियो सब गुण तेरे, सब गुण तेरे ठाकुर मेरे, सब गुण तेरे ठाकुर मेरे। कित मुख तुध सलाही, कित मुख तुध सलाही। गुण अब गुण मेरा किछ न विचारिया, रोग किछ न विचारिया। गुण अब गुण मेरा किछ न विचारिया, बख्श लिया खिन माही, बख्श लिया खिन माही। नो नित पाई बजी बधाई, नो नित पाई बजी बधाई। बाजे अनहद तूरे, बाजे अनहद तूरे, कहो नानक मैं बर कर पाया, कहो नानक मैं बर कर पाया। लाथे सगल बिसूरे मेरे, लाथे सगल बिसूरे। पूरी आशा जी मेरी मनसा, सा मेरे नाम पूरी आशा, सा मेरे नाम पूरी आशा, सा मेरे नाम पूरी आशा। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता, माता भरत महत। दिवस रात दाई दाया, खेलै सगल जगत। चंगियाइयां बुरियाइयां बचे धर्म दूत, करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जिनी नाम ध्याया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तुम पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुमरे सूतर तुम थे होए सो आज्ञा का, तुमरी गत मित तुम ही जानी। नानक दास सदा कुर्बान। बोलने की सतनाम श्री वाहिगुरू। एक ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वास, श्री भगवती जी की बाछे दसवीं। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक देव जी आए, फिर भगवती अमरदास रामदास जी सहाय। अर्जन हर गोविंद नव सिमराव, श्री हरिदास श्री हरिकृष्ण जी आइए। जिन जिठे शब्द उपजाए तेग बहादुर सिमरिय, घर नौन की आबिद है सब थाई में सहाय। दसवें पातशाह
श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब ठाई वसाया दसम पातशाह की जोत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के दर्शन दीदार पाठ कर अंदर के खालसा साहब बोलना जी। पंज प्यारे चार साहबजादे 40 मूर्तियां 8 ठप्पियां जनानियां नाम जपिया बन के छकिया देख चलाई देख वाए देख के अंडर कीता इन्हां प्यारियां सचैरियां की कमाई का ध्यान रखे खालसा साहब बोलना जी। जिन्हां सिंहां सिंगियां दरवेशे जिते बन बन कटाए खोपरियां नूरियां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चरवाए गए गुरुद्वारियां की सेवा लई कुर्बानियां कीतियां सिੱਖੀ के साथ साथ संग निभाही तिन्हां सिंहां सिंगियां की कमाई का ध्यान रखे खालसा साहब बोलना जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां का ध्यान रखे खालसा साहब बोलना जी। प्रथम सवै खालसे जी की अरदास है खालसे जी को वाहिगुरु 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 पिता किताबों का सदका सर्व सुख होवे जहाँ जहाँ गुरु खालसा जी साहिब तन इत्थे आए हैं देखते फतेह बिरद की पैज बंद की जी श्री साहब जी सहाय गुरु खालसे जी के बोल बाले बोलना जी। सिखा सिक्खी दान केस दान रहर दान विवेक दान दिशा दान 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 नाम दान श्री प्रसिद्धि स्नान चौकियां चंदे भूगे जुगो जुगाटन धर्म का जयकार खालसा साहब बोलना जी। गुरसिखा का मन नीवा मन चुकी मत बंदे राखा आप काल पकवाई जो अपने पंथ दे साहिदार कार्य ननकाना साहिब के गुरुद्वारे पंथ में छोड़िया गए तिन्हां की सेवा संभालता नाम खुले विश्राम का खालसा पंथ बख्शो निवारियां दी मान निताणियां दी तान निओटियां दी ओढ़ दो जहान दे वाले सृष्टि दे करता धरता जो जी प्रीतम अंतर्यामी दातार पातशाह धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी और बख्शिश रहमत सदके आवेदन करने सरखा का एडम अबिट अरागी जो नाम सौंफ सरदार श्री शराब मिलानी बरहाल कद अरागी ते बच्ची जशमीन कौर सुखदेव साहब बलदेव सिंह जी मलकीत कौर जी गुरमत मर्यादा अनुसार लावा फेरी आनंद कार्य समाधा पातशाह जी सवार जोड़ी में सत्य रहमत बरियात रखना ग्रस्त मार्ग सिखी जीवन नाम बढ़ना प्यार प्रेमा भक्ति बख्शिश करने दाता परिवार के सत्य रहमत बरियात रखना परस्पर प्रेम भाव में गुरु रखने देश प्रदेश संस्थापना अपने चरणों की प्रीति प्रेमा भक्ति बख्शिश से शुभ पूर्ण करने जो इन्होंने विषयों में दुआ परिवार में सोने पोशाके हाजिर करने में माया हाजिर रही सेवका सेवादर परवान करने नामदान के चरणन प्रीति सेवा करने समर्था समूह संतान तरफल बेटाओं परवान करने नामदान के चरणन प्रीति बख्शिश ने ग्राम शादी हाजिर आप दिन परवान होवे परवान में प्रचार सेवका संतान दर्शन लायक होवे पवित्र मनावा बख्शो पवित्र मनाने के आधार से संबंध बख्शो सेव भी जो प्यारे ले जिन मिलते आप जिनका नाम चेता है नानक नाम चढ़ती कला वाहिगुरु जी का खालसा जोरा गया भी अकाल की सब सिखन को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मानियो जो प्रभु को मिलबो चाहे राज करेगा खालसा ख्वार हुए सो मिलेंगे ख्वार हुए सो मिलेंगे बुरे सो निहा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी जे तो ठाक पगना न तुझा वेखा या भाई मुंडातड़ी नित हृदय रखा सुमा
ਪੰਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੇ ਮਿਲਿਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸਾਹ ਸੁਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰ ਆਪ ਖਲੋਇਆ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾ ਬਣਵਾਇਆ ਰਾਮ ਧਰਤ ਸੁਆਵੀ ਤਾਲ ਸੁਆਵਾ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾ ਬਣਵਾਇਆ ਰਾਮ ਧਰ ਸੁਆਵੀ ਤਾਲ ਸੁਆਵਾ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਪੂਰਨ ਸਾਜ ਕਰਾ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਭਇਆ ਜਗੰਤਰ ਲਾਥੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਅਟਟ ਅਬਨਾਸੀ ਜਸ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨੀ ਗਾਇਆ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦਿਆ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਭਇਆ ਜਗੰਤਰ ਸਾਜੇ ਲਗ ਵਿਸੂਰੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਅਟਟ ਅਬਨਾਸੀ ਜਸ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨੀ ਗਾਇਆ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। You did it. You did a great job. Nervous for nothing, right? Be happy this your day. Both of you did great. So congratulations to both of you and both families and everybody who's here. You are truly blessed because you are blessed by Guru. And I just want to convey a couple of things which I think are important. It's my duty to convey that message which Guru has conveyed to all of us. First of all, I would highly recommend, if you already have not, please go online and check what we did today, especially go over the Lama Bani, what it tells us. I'll give you a gist of it. So today, you are entering a new part of your life. As a husband and wife, you're starting this beautiful journey. So what is Guru's message to us at this occasion and all the occasions? So, makes it very simple, yet powerful. Guru says, we talk about where is Lord, where is that God who is managing the whole cosmos, the whole universe. Where is that? There is some supreme power, we all know, who is running this show, right? So, but Guru Granth Sahib is telling us, where this supreme power lives? You know where it lives? It's in you. It's within you. He said, if you really want to respect that supreme power, respect His creation. Think about it. Think about the message. If we love and respect His creation, all of His creation, and it starts from home, between two of you. I know your relationship is already based on love, but Guru tells us, all your life you are committed to each other. There is one fundamental thread to keep you together all the time and love each other, which is love and respect each other. Doesn't matter what situation we are in. Just love and respect, that is it. If we think everybody, all His creation is Him, think about it. Just give it a little bit of imagination. Do we love God who has blessed us with wonderful parents, with His friends and your husband and wife, each other, Do we love Him?
It all happens. It's not that you found each other. No, it's all His will. That's what He wants, right? So I shouldn't be saying he or she, whatever we can call, but that's what Supreme Power wants, you to be together. But you have chosen this wonderful time and occasion to come to Guru Sanctuary. So I want to convey his message to you in very simple words. Please keep this in mind. When you went around 4 times, you have committed that you will keep this in mind. You know why we go around, Guru? That your wisdom, your message will be, my life will be around your wisdom. My life is not regular life anymore. I will follow the wisdom of your word, what you have told me, which is very simple. 2 things, beta. There's another one he is saying, because in Sikhi there are 2 things. One is love of human beings, seva, help each other. It's basically saying, anybody who needs help, not just home, anybody who needs help, whatever we can do, help them. That's what true Sikhi is. And it starts from home. Again, you need help, she needs help, he needs help. Guess what? Who should be there first place? Us, right? So again, congratulations to all of you. You too are blessed because you came to Guru Sanctuary and Guru has given you this wonderful blessing to live your new life. And I'm sure you will be happy forever. And please keep Guru's word in mind. You will even be happier. Thank you all so much for coming. I'm sorry about a little bit inconvenience, but this is how Guru wanted. Think about this wonderful day, how many people are getting cured today on this auspicious day which you chose at the same place when you're doing it. You have plenty of space, nobody else is here. It happened the way it's supposed to be happening. Things happen the way it's supposed to be happening. Well, again, thank you so much and congratulations. You did a wonderful job. Please don't be stressful. No, it's your day. Be happy and enjoy it. Again, thank you so much for coming here. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.
that you always have. How about that? Don't